Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Jiten Singh, Faculty of Creativities, and today I will be discuss UCEED important topics na and na problems. Okay, so today's sessions जो है वो काफी important है UCEED एग्जाम के लिए. तो okay, hello everyone. Okay, चलो सभी लोग आ जाइए भाई, है ना. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार प्यार दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि उन सभी की हेल्प हो सके जिनको इसकी नीड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि यूसीड किस टाइप का पैटर्न पूछता है और आपको कितनी स्टडी करना चाहिए, क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना, मतलब एक पूरा स्ट्रेटजी से लेके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे और हम आज कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. मोहित हेलो. अवेशी आई एम सो स्ट्रेस्ड फॉर यूसी भाई. ओके बेटा, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी सारी टेंशन को मैं दूर करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. हम जितना बोले आप उतना करिए, आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको. और इसके अलावा अगर आपको और भी स्ट्रेस है तो हमारा एक बूट कैंप है अभी, जो कि 8 ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आप वहां पर 7 डेज का जो बूट कैंप है उसको उसको ज्वाइन कीजिए और आपका स्ट्रेस टोटली दूर हो जाएगा. ओके, सो हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजों को. ओके, तो यूसीड के मैं पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको, फिर उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे. ओके, सो नाउ so below is belt and pulley arrangement. How many pulleys are rotating clockwise? This is the UC 2015 problem. Okay, hello, है ना. So now, so below is a belt and pulley arrangement. How many pulleys are rotating clockwise? So now this is the UC 2015 and problem number 17. Okay. Now this is the next problem, UC 2017. If gear P is driving gear and rotate clockwise, which of the following statement is true? And problem number 66, UC 2017. And next problem, 2018, problem number 11. Toe blow is a combination of fixed pulley. If the triangular load moved on, how many pulleys will rotate in the same direction as the smallest pulley? The overlapping paths do not interface with each other. Okay, so now this is the second problem. And next, figure show a cloth line attached to 4 independent pulley PQRS. Which of the options represent the correct rotation of pulley that would result is lowering the cloth? Now this is the no, another problem of UCEED net 2022. Next one 2022. A system of gear and belt is shown below. The diameter of gear M and PQ are S 3 is to 1, 2, 1, 3, and 2 meter respectively. The gear M is rotating at 100 RPM. What is the RPM of gear S? So ये तो सारे आपके problems हैं UCEEDs के लिए, है ना. These are the problems. So how to solve these problems? उसके लिए हम आज देखेंगे पूरा कंप्लीट थ्योरी सेशन. ओके, सो नाउ दिस इज द थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ. ओके, सो इन दिस सेशन वी डिस्कस द थ्योरी एंड न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम आल्सो. हेलो एवरीवन, हेलो. ओके बेटा, ना आई एम ट्राइंग टू. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, so this is the first session for UCEED examinations. So now first of all we discuss the UCEED examination pattern. So now in a UCEED there are only 57 problems. Yeah, 57 questions. There are further classified into 3 parts. First one is the NAT, second one is MS cube, and third one is MCQ. Okay. So now first one is NAT. There are 14 problem and each carry 4 marks. So now there is 56 marks. And now MCQ. There are 15 problem, each carry 4 marks. Now there is 60 and now there is 28 problem, each carry 3 marks. Now there is 84. Now overall aptitude part is 300. Sorry, 200. Overall aptitude part is a 200. Okay, 56, 84 and 60. Now 200. Okay,
एंड 100 आपका ड्राइंग स्केचिंग एंड डिजाइन एप्टीट्यूड। ओके, बूट कैंप इज ओनली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स बेटा, ऑफलाइन बूट कैंप रहेगा आपका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ओनली फॉर ऑफलाइन, ऑफलाइन, ठीक है। यस बेटा बिल्कुल, है ना, हम आरपीएम एंड स्पीड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो नाउ अगर हम देखेंगे, है ना, दिस इज द एनएटी प्रॉब्लम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएटी? न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम। इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना, वी write down the answer, correct answer in the comment. Okay, so in MSQ multiple select question, there are more than one correct answer, or there is a negative marking, there is no negative marking, there is a negative marking, and 25% negative marking or one fourth, and there is also 25% negative marking or one fourth. Okay, so now first of all we discuss the problem gear and pulley problem, or this is the important session for UCEED examinations. Okay, first of all a gear can be represented either. So why we use gear and pulley problem? Okay, anyone explain why we use gear and pulley? क्या जरूरत था गियर एंड पुली का यूज करने का? Why we use gear and pulley? Okay, first of all अगर मैं बात करूं, suppose this is the load. Okay, okay, this is the load, everyone sees now the, ये बॉटल आपको दिख रहा है, ये सुनो, now this is the load, अगर मैं इसको ना लिफ्ट कर रहा हूँ, ये सुनो, suppose क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, yes or no? Now we lift the bottle opposite direction to the gravitational force. Now अभी क्या होगा? Yes बेटा, डाउनलोडेबल नोट्स आर आल्सो अवेलेबल इन डिजाइन कम्युनिटी, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें आपको डिजाइन कम्युनिटीज में मिल जाएगा। ओके, सो ओके, यस, बिकॉज टू जनरेट मोर पावर इन लेस एफर्ट, बिकॉज दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज, है ना, ओके, मोहम्मद बिल्कुल सही, राइट आंसर। नाउ this is, and now first this one and now this one. Okay, so gear and pulleys यहाँ पर होगा क्या? Now this is the gear and now pulley. So that is the pulley. Pulley क्या करता है generally? Change the direction. Now this is the load and this is the force. Pulley क्या करेगा आपका? Change the direction. Okay, and gear क्या करता है? Less efforts and maximum work. Okay, so now we discuss what is gear. A gear can be represented either wheel, okay, now either wheel, either cylindricals, okay. A major characteristic of these wheels cylinder are cogs and teeth running along their outsides. Now this is the cog or teeth along the surface, okay. हम बोल सकते हैं कि भाई क्या, running along their outside is the main three purpose of gear, change the direction of the motion. Okay, so first of all, change the direction of motion. Second, increase or reduce speed. And now third one is force or transmit force. Now, okay, so gear are generally used to three purpose. First one is क्या हो जाएगा आपका? Change the direction of force. Now with the help of gear, we change the direction of force. Now second, increase or decrease speed, and now third one is force to transmit force. Okay, now this is the क्या है, प्रॉपर्टीज, या हम बोल सकते हैं पर्पज ऑफ गियर। अब क्वेश्चन रिगार्डिंग गियर में टिपिकली यूज इन द सॉल्व, तो द फंडामेंटल्स, रूल्स ऑफ थंब जनरली वही 1 2 3 4। नाउ जनरली गियर आर टू टाइप्स। ओके, गियर आर two types. First one is meshed and second one is unmeshed. So what is the meshed? Meshed means connected. Okay, directly. And connected
indirectly. Indirectly means with the help of chain or belt. Now here are two types connections. One is meshed and another is unmeshed. Okay. तो यहाँ आपको how to manage time. Okay. So इसका मैं आंसर अभी दूंगा how to manage the time. Now first of all we discuss the problem. Then after we discuss how to manage time, how to increase your score, है ना? उसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे. आईआईटी में जाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? ओके. So depends on a cutoff and difficulties of paper. But if you score 50%, so now you got IIT Bombay easily. Na? If you score 150, more than 150, then definitely you, है ना, you will go to IIT Bombay. Now, अभी first of all, meshed gear, ठीक है? The example of meshed gear. Also, example of meshed gear में क्या होगा? If gear are connected, yeah, adjacent gear will move in opposite direction. If the gear are odd number of wheels, the last wheel will turn in the same direction as the first wheel. Now, example 1, 2, 3, 4 and 5. तो मैं बोल सकता हूँ 1, 3 and 5, 2 and 4. Now 2 and 4 into move to. Now 1, 3, 4, 5 move to anti-clockwise. Now we can say 2 and 4 move to clockwise direction. This is the procedure of आपका. ये कौन सा हो जाएगा आपका? Okay. Now unmeshed. Unmeshed means not physically touched. Gear that are connected by a chain or belt will move in the same direction. Chain cross, they will move to opposite direction. Now this is the, if gear one, now this is the gear and now this is another gear. If इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया है? That are connected by a chain or belt. Simple ये. So now this is the gear A and now this is the gear B. Now gear A is moved to clockwise direction. Now gear B also move into clockwise direction. Now this is the gear A and now this is the gear B. Okay. Now these are connected to cross chain or belt. Suppose gear A move to clockwise direction. Now gear B also move into anti-clockwise direction. So now gear B move into anti-clockwise direction. Okay. And next they will move opposite direction. There is a, है ना? There is a trade off between force and speed. अगर more teeth, फिर से समझना बेटा, है ना? Okay. So now next concept एक और discuss करता हूँ मैं यहाँ पर, समझना. Suppose this is the gear one and now this is the gear two. Now this is the, now this is gear A and now this is the gear B. So अगर मैं बात करूँ, gear A have more teeth comparatively. B, gear B less teeth. Gear A have more perimeter या circumference. Gear A more diameter and now gear B less circumference, less diameter. Yes or no? So yeah, these are the comparison of gear one and gear two. Yes or no? अगर मैं बोलूं यहाँ पर suppose gear one, gear A ना बिगर गियर है. सो अगर यहाँ इसको कंपैरिजन करूं, सपोज नाउ मैं बाइसिकल बना देता हूँ. यहाँ पे देखिए, स्मॉल गियर एंड लार्ज गियर या बिगर गियर. सो आपको क्लियर है हमें किसमें मैक्सिमम फोर्स लगाना रहेगा? यहाँ पर क्या होगा आपका
यहाँ पर साइज कैसा होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई टीथ, मोर टीथ, ठीक है, लेस स्पीड एंड मोर फोर्स। ओके, लेस टीथ, more speed and less force. So now we can say easily force is directly proportional to teeth. Yes or no? And force is inversely proportional to speed. मैक्सिमम होगा तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, सो स्पीड मैक्सिमम किस में होगा, स्मॉल गियर में क्या होगा, स्पीड मैक्सिमम एंड, है ना। so now we can say this is the formula, यानी force and speed and teeth and speed. So now we can say teeth डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। नाउ टीथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, n1 इज द नंबर वन, n इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, n यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टीथ, एंड v रिप्रेजेंट करेगा, so now we can say n inversely proportional to v. Now n1 upon n2 equal to v2 upon v1, the important formula to solve UCEED problem को रट्टा मार के रखना है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यूसीड एग्जाम, याद रखना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये यूसीड, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू यू, है ना, सॉल्व यूसीड प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ दिस इज द n इज द नंबर ऑफ टी ऑफ गियर 1 एंड 2, नॉट 1 या 2, 1 एंड 2। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, इस टाइप का प्रॉब्लम अभी तक यूसीड में नहीं आया है ना, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अभी तक मैं बात करूं तो यूसीड में नहीं आया। तो मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल कॉक व्हील्स। ओके, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉक व्हील्स। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉक व्हील्स, व्हेन इंटरनल कॉक व्हील्स, द लाइट ब्लू, लाइट ब्लू है ना, internal cog wheel, and now this one is external cog wheel. Okay, gray are joined together, they will move in the same direction. The velocity to size ratio will remain as the internal cog wheel. Okay, if the internal cog wheel, okay, if the internal cog wheel revolve 20 rpm, so external cog wheel also revolve 20 rpm. Yes or no? तो ये चीज को अंडरलाइन करना और याद रखना। यस बेटा, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए एंड देन आफ्टर पार्ट बी। तो नाउ अब सपोज यहाँ पर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पर सपोज इंटरनल कॉग व्हील मूव टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज internal cog wheel move into clockwise direction, so then external cog wheel also move into clockwise direction. Suppose internal cog wheel move into clockwise direction, then external cog wheel also move into clockwise direction. Okay. If internal cog wheel move into anti-clockwise direction, then external cog wheel also move into anti-clockwise direction. Now this is the next problem, rack and pinion problem. So now this is the rack and now this is the pinion. Okay. Pinion या gear. Suppose if rack move into left side, suppose the rack move into ना left side. अगर मैं बात करूं, rack move to left side, then pinion move to clockwise. Now the force will, the force, and this is the force. Okay. Now rack move to right direction. Now pinion move to anti-clockwise.
clockwise direction. Yes or no? Rack move to clockwise direction. Rack move to left, then pinion move to clockwise direction. Rack move to right, and pinion move to anti-clockwise direction. Okay. So now when cogwheel connected to a tooth-head rack. So what is the meaning of tooth-head? This is the tooth head, rack. The force is transmitted from circular to linear. In the instant, the rack will move in the same direction the wheel at the meshing point. तो हम बोल सकते हैं कि cogwheel moving in a clockwise direction at the meshing point. You can see that the wheel directions is moving towards the left. Okay, because the rack underneath will move the teeth left. So now this is the concept rack and pinion gear problem. Now we discuss the problem of pulley. So now this is the problem of pulley. So pulley का combinations क्या होगा? Now this is the fixed pulley. Now this is the movable pulley, and now this is the combined pulley. So what is the concept of pulley? Suppose वही same चीज ना, we want to lift the bottle. Okay. Now this is the bottle. Okay. और ये बॉटल है और वी वांट टू लिफ्ट. मैं इसको लिफ्ट करना चाहता हूँ. जस्ट सपोज अब मैं इसको लिफ्ट करूंगा, द फोर्स में क्या होगा? अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ इसको ऐसा पुल करना. नाउ दिस इज द टफेस्ट एंड नाउ दिस इज द इजीएस्ट. ओके, किसी चीज को उस एंड पुल करना इजी होगा. नाउ सपोज दिस इज द अर्थ. ओके, और object, and earth attract the object due to gravity. So now we can say every object, यानी मैं बोल सकता हूँ अर्थ attract every object towards the center due to its gravity. Okay, earth attract every object towards the center to its due to its gravity. अब यहाँ पर समझना. Now this is the load W. Okay, अब यहाँ पर देखेंगे. नाउ इसका वेट जो है वो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है कहाँ पर? बिकॉज ग्रेविटी. अभी मैं इसको लिफ्ट करूंगा यहाँ से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा. बट नाउ दिस इज द फिक्स्ड पुली, और मैं यहाँ से क्या करूंगा? नाउ द फोर्स एंड नाउ द फोर्स. यहाँ क्या हो जाएगा? चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फिक्स्ड पुली. नाउ दिस वन इज मूवेबल पुली. ओके, सो नाउ आपने देखा होगा मूवेबल पुली. ओके, देखो 50 एंड 50. अगर मैं यहाँ से इसको मूव करूंगा ये नीचे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ये सुनो, अगर देखो यहाँ से देखो 50-50 वेट होगा बॉटल का. या सुनो, अगर मैं एक तरफ का हाथ कर दूं तो नीचे जाएगी. या सुनो, ये लोड हो गया ज्यादा इस पे. अभी दोनों में इजी, आप घर पे भी करके देख सकते हैं. इस पर लोड ज्यादा होगा, अभी दोनों में इक्वल वेट, बिकॉज वेट क्या हो गया? ट्रांसफर. अभी नाउ दिस इज द W. नाउ यहाँ पर देखेंगे हम W/2 एंड W/2. ये किसकी हेल्प से हुआ? मूवेबल पुली. मूवेबल पुली क्या करेगा? वेट को हाफ करेगा. ओके, तो नाउ यहाँ पर देखिए, दिस इज द कॉम्बिनेशन पुली. ये वेट था W/2 एंड W/2, और मुझे यहाँ कितना फोर्स लगाना पड़ा? ओनली W/2. सेम ब्लॉक को यहाँ मैं पुल कर रहा हूँ, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? W. Now W/2. That's why we use combinations pulley. So fixed pulley system, that load will move while the pulley does not. Okay, the pulley does not reduce the force needed to lift the load. It merely changes its directions. Now movable pulley is the movable pulley pattern system. The pulley will move along with the load. This is term cut the force or lifting the object. Its weight is in half. Okay, as with here, there is also trade-off. You need to half of the force lift load, but double the amount of the rope. Now, ना इसको याद रखना क्या चाहिए आपको? But double the amount of rope.
So now, combinations pulley. These the system include more than one pulley and will either include both fixed or movable pulley. In these system, force or lifting the object will be reduced, but the distance for doing so will increase. So the force required to the lift the object is equal to the number of ropes supporting it. Okay. Now this is the combination of fixed pulley. Now this is the weight, and now this is the force and this is the force. Now change the direction. Change in direction, and now this is the combination of combined pulley. Now this is the fixed pulley and now this is the movable pulley. Okay. So the gear A and now the gear B. Okay. Gear A have 20 teeth and gear B have 80 teeth. What is the ratio between gear A and gear B? What is the ratio of gear A and gear B? What is the velocity ratio? Okay. What is the velocity ratio between gear A and gear B? If gear A have 20 teeth and gear B have 80 teeth, what is the ratio between gear A and gear B? या speed ratio between gear A and gear B. तो हम बोल सकते हैं now distance moved by effort या gear A is 20 and distance moved by gear B is 80. Now we can say 4 by is 4 is to 1. Now 4 is to 1. So now we can say gear A is 4 times faster than gear B. Okay. Now we can say gear A is 4 times faster than gear B because N1 upon N2 equal to V2 upon V1. And now we know that 20 upon NA equal to 20, NB equal to 80, and VA and VB. Okay. So now NA upon NB equal to VB upon A. Now 20 upon 80, 1 by 4. Now VA equal to 4 VB. So now we can say VA is a more, 4 times faster than VB. Yes or no? Now this is the next. So now gear A is a 20 teeth, 25 teeth, and gear B is a 20, 75 teeth. So calculate gear A, है is which gear is faster, A and B. So which gear is faster, A and B. Which gear is faster, A and B. What is the work to velocity ratio? Now we can easily 1 by 3 is the work to velocity ratio. Now gear A is 3 times faster to gear A. Okay. Yes. Gear A is faster than gear B. Okay. Now this is the problem number 1. Chain traveling clockwise around gear in the diagram shows above. Gear A and B and C are connected by a chain. The diameter of the gear are 1 inch, 2 inch, and 4 inch respectively. If gear A is turning at 20 revolution per minute, what is the turning rate of gear C? What is the turning rate of gear C? Now the ratio is 1, 2, and 4. Yes or no? Now velocity is
20 RPM. Yes or no? Now this is the 20 and half double. Now this is the diameter. So मैंने आपको explain भी किया था, है ना? First of all, then the relation between diameter inversely proportional to velocity. Yes or no? Teeth also inversely proportional to velocity. Area and circumference also inversely proportional to velocity. Okay. So now that is 10 and now that is 5. So right answer is 5 RPM. Okay. Now B N A क्या मैं बोल सकता हूँ N A N B N N C 1 is to 2 is to 4. And now B A is given 20 RPM. Now we can say NA upon NB equal to PV upon PA. So now NA is 1 and B is 2 and VB upon VA 20 now 10. So now we can say V equal to 10 RPM and now NB upon NC equal to VC upon VB. So now 2 by 4 equal to VC upon now VB equal to 10. Now 1 by 2 and a 5. So VC equal to 5 RPM. This is the detailed solution of the problem. So now right answer is 5 RPM. So now everyone calculate 5 RPM, yes or no? Okay. So now 5 RPM is a right answer. Next. ठीक है. The belt and pulley arrangement. How many pulleys are rotating clockwise? How many pulleys are rotating clockwise? Okay, repeat please. Now. So now repeat. Once again, once again. Okay, we will discuss what is the concept. We discuss the concept diameter inversely proportional to velocity. Yes or no? Now also discuss diameter, teeth, circumference, area. These are the similar term. Okay, we will discuss. Yes or no? Now, in the diagram shown above, now this is the diagram. Gear ABC connected by a chain. Now gear ABC by connected by a chain. The diameter of the gear one, gear are 1, 2, and 4. 1, 2, and 4. Now we can easily say, now this is the diameter 4. Now this is the diameter 2, and now this is the diameter 1. Yes or no? And if gear A is turning 20 revolution per minute, now gear is speed 20 RPM. Now अगर मैं देखूंगा, we also मुझे पता है कि gear A have left teeth comparatively gear B and gear C has also less teeth. So अगर मैं बात करूंगा gear C has also more teeth. तो यहाँ मैं कंपेयर करूंगा NA, NB, NC is the ratio is given 1 to 4. Now VA given is to 20 RPM. Or now we know that N1 upon N2 equal to V2 upon V1. Now, yes or no? N1 upon N2 equal to V2 upon V1. So now what is the value of N1? Now 1 upon 2 equal to VB upon 20. So now we calculate 10. So VB equal to 10 RPM. Now NB upon NC equal to VC upon VB. 2 is to 4, VC equal to upon 10. Now 2 is to 4, 1 by 2. Now 2 say yeah, 10, 5. Now VC equal to 5 RPM. Or now we can we easily calculate. Mohit,
यस बेटा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूसीड. तो नाउ दिस इज द यूसी 2015 प्रॉब्लम, है ना. तो सॉल्व द प्रॉब्लम. So below is the belt and pulley arrangement. How many pulleys are rotating clockwise? How many pulleys are rotating clockwise? So concept आपको याद रखना है. How many pulleys are rotating clockwise? If cross chain. तो now concept क्या था? Cross chain direction will change. Direction change. Okay. Or now normal chain, the cross chain क्या था? Direction change, है ना. और normal same direction, the as it is done. Okay. So now this is move. Now what is this direction? Clockwise and anti-clockwise. Now this is anti-clockwise because we all know this is clockwise and this is anti-clockwise, and now this is anti-clockwise. Now rotation now clockwise. Okay. Now this is also clockwise because same direction. Now yes, cross था, ये cross है. Now this is the cross. That's why we can clockwise direction. Now similar clockwise. Now anti-clockwise. Now anti-clockwise. Now anti-clockwise. Now clockwise. Now clockwise. Okay. और now this is also clockwise. तो उसने पूछा है how many pulleys are rotating clockwise? Now 1, 2, 3, 4 and 5. Now answer is 5. 5 pulleys arrangement are clockwise. सभी ने आंसर पहले से यूसीड में देख रखा होगा, आई होप, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ यूसीड 2015, प्रॉब्लम नंबर 17. ठीक है, यूसीड 2015 प्रॉब्लम नंबर 15. सिंपल सा लॉजिक, क्रॉस चेन डायरेक्शन चेंज एंड सिमिलर चेन. ठीक है, सेम डायरेक्शन. Yes or no? Because anti-clockwise, direction change clockwise, direction similar clockwise, direction change anti-clockwise, direction similar anti-clockwise, direction similar anti-clockwise. Now, direct cross chain, because cross chain direction change clockwise, direction same clockwise, direction same clockwise. Now 1, 2, 3, and 4 and 5. Now 5 is the right answer. So everyone got the concept? Now this is the UC 2017. If gear P is the driving gear and rotate clockwise, which of the following statement is true? So problem number 66. What is the right answer of the given problem? अभी तुक्का मत मारना ना. Okay. Okay. So now मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ. कुछ लोगों का ऐसा था कि देखो, ये देखो. Now this is the anti-clockwise. Now यहाँ से अभी ये ऐसे लेके ऐसे. Okay. यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे रोटेट यहाँ से और यहाँ से. ये लोड ऐसे जाएगा बेटा, यहाँ से ये लोड नीचे आ रहा है, ये सुनो, ये लोड नीचे आएगा तो ये यहाँ से समझो, जब ये लोड नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर ऐसा जाएगा. ठीक है, रोटेशन से समझिए बेटा. मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट जो था वो, हाँ उस, चलो मैं बता देता हूँ. मिस्टेक है ना प्रीवियस क्वेश्चन. देखो, ये इधर लोड मूव करेगा, ये सुनो, इधर मूव करेगा, ये यहाँ से ये ऐसा मूव करेगा क्लॉकवाइज, ये सुनो. नाउ ये ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज. नाउ ये यहाँ से फिर ये ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज, ये सुनो. फिर नाउ ये ऐसे मूव करेगा. ठीक है, ये कैसे मूव, अब यहाँ से समझिए बेटा, ये यहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ से, ये डायरेक्शन इधर जा रहा है. तो नाउ ये ऐसे मूव करेगा, फिर से समझो, ये ऐसे मूव कर रहा है यहाँ से, ऐसे ये मूव करेगा, फिर ये
ऑल्सो ऐसे मूव करेगा। तो उसने क्या पूछा है आपको, रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ये फिर ऐसे मूव करेगा, ये फिर ऐसे मूव करेगा। तो आप इसको इजीली रोटेशंस देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्रॉस चेन डायरेक्शन चेंज, है ना, सिंगुलर चेंज डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, एक बार और कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये मिल जाएगा आपको, यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा। बेटा ये क्रॉस चेन है, क्रॉस। नाउ दिस इज द क्रॉस, समझिए इसको। नाउ सॉल्व करिए इसको। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, आप कैसे भी करके देखोगे ना, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पुलीज कितने दिए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखोगे उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उतने ही निकलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज योर डाउट मोहित? ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 66? So P is the driving gear and rotate clockwise. Now, so now this is clockwise, clockwise. Okay. तो ये clockwise है, ये नीचे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से समझिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, नाउ दिस इज क्लॉकवाइज। ओके, और नाउ ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, एंड नाउ ये आपका एंटी क्लॉक। तो व्हाट इज द राइट आंसर, उसने क्या पूछा है? दिस टॉपिक है ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीड एग्जामिनेशन। बेटा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द PYP, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की स्टडी करिए। देन आफ्टर द, है ना, उसके बाद आप सेशन देखिए, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करेंगे आप, तो आपको दिखेगा ये हाउ टू सॉल्व। बेटा मैंने इसको इतना इजीली कैसे सॉल्व किया है ना, हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था मैच्ड एंड अनमैच्ड, यस और नो, याद हो आपको? गियर आर कनेक्टेड टू टू टाइप्स, गियर है ना, गियर कनेक्शन आर ओनली टू टाइप, वन इज मैच्ड एंड सेकंड इज अनमैच्ड, यस और नो। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया था, यस और नो। मैच्ड, मैच्ड में क्या होगा, चेंज इन सेम अपोजिट डायरेक्शन, यस और नो, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, सेम एंड क्रॉस, यहाँ पर कौन सा काम चलता है, क्रॉस एंड सिमिलर डायरेक्शन, यस और नो। नाउ यहाँ पर क्या था, अपोजिट, 1 2, यहाँ से देखिए, ये देखो, नाउ दिस इज द 1 2, यहाँ से कनेक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो रोटेट क्लॉकवाइज, नाउ दिस इज, ये कहाँ पर जाएगा आपका, लो, ये यहाँ जाएगा, तो ये ऐसा रोटेट होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। नाउ ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ फोर्स लगेगा, तो क्लॉकवाइज। नाउ जब ये ऐसा रोटेट होगा, यहाँ फोर्स लगेगा, यस, इस साइड, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कैसा, भाई आपको पता है, यहाँ फोर्स लगेगा, ये ऐसा घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर, तो ये क्लॉकवाइज। नाउ जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऐसा रोटेट, तो एंटी क्लॉक। ये सुनो, मैंने सिंपल क्या किया था, सिंपल मुझे पता था, ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक तो ये क्लॉक, ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक। या सुनो, बिकॉज मुझे पता है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो मैं क्या करूंगा, 1 पर कौन है, P, या सुनो, 3 पर कौन है, Q, 3 पर कौन हो जाएगा आपका, R, ठीक है, एंड 5 पर कौन हो जाएगा, T। नाउ फिर मैं लिखूंगा 2 पर कौन है, Q, फिर हो जाएगा आपका S, एंड नाउ U। सभी को पता है ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ठीक है।
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सबको पता है भाई। सो ओनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, Q will rotate clockwise and S will rotate anti-clockwise. Q और S दोनों both are anti-clockwise है ना। R and T both are rotate anti-clockwise. R and T both are rotate clockwise. R will rotate clockwise. R will rotate clockwise. And U will rotate anti-clockwise. U will rotate anti-clockwise. Now C is the right answer. This is the easiest and simplest method. Okay. इजी चुटकियों में होता है बेटा ये ना, 1 2 3 सिमिलर, वही सेम कॉन्सेप्ट, 1 3 5 2 4 6। नाउ अभी यहां समझना, एवरीवन concentrate. Toe blow is a combination of fixed pulley. Now this is the problem of 2018 UCEED problem, gear and pulley problem, 2018 problem number 11. So shown below, in the combination of fixed pulley, if the triangular load move down. Now this is the triangular load, and now this is move down. Okay. So how many pulley will rotate in the same direction as the smallest pulley? Okay, including itself. The overlapping path do not interface the each other. Okay. So now this is the overlapping path. They do not interfere. Okay. Now this is the overlapping path. This is not interfere to each other. So calculate what is the right answer of the problem number 11. First, this problem है बेटा, यूसीड का मैंने विदिन सेकंड सॉल्व किया है। Now this is the problem number 11. क्या हो जाएगा नाउ, ये टॉप पर जाएगा, नाउ ये यहां से जाएगा। नाउ दिस इज द एंटी, ऐसे मूव होगा एंटी क्लॉक, ऐसे मूव होगा, सुनो, एंटी क्लॉक। नाउ ऐसे मूव होगा क्लॉक वाइज। नाउ ऐसे मूव होगा क्लॉक वाइज। नाउ यहाँ से देखिए कैसे मूव हो रहा है, ऐसा, ऐसे समझ, दिस इज ऑल्सो मूव होगा। फिर यहाँ से समझ, ये ऐसे मूव होगा एंटी क्लॉक, क्रॉस होता है। नाउ यहाँ से ये ऐसे मूव होगा, यहाँ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन समझ, ये डायरेक्शन, फिर से समझ, एंटी क्लॉक। ठीक है। नाउ ये ऐसे समझ, ये ऐसे रोटेट, नाउ ऐसे समझिए, ऐसे रोटेट हो, ये सुनो, यहाँ ऐसा रोटेट हो, ये ऐसा रोटेट एंटी क्लॉक। नाउ यहाँ से ये ऐसे रोटेट, नाउ दिस ऑल्सो एंटी क्लॉक। एंड नाउ यहाँ से रोटेट क्लॉक वाइज। नाउ ऐसे रोटेट हो एंटी क्लॉक। नाउ फिर समझिए, ये ऐसे रोटेट हो, यहाँ से ये रस्सी ऐसा आएगा, ये वायर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाए, जब भी ऐसे रोटेट होगा तो क्लॉक वाइज, फिर ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है। तो नाउ क्लॉक वाइज, फिर ये ऐसे मूव होगा यहाँ पर, ऐसा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है। नाउ फिर ये ऐसे मूव होगा क्लॉक वाइज। नाउ यहाँ से देखिए, ये ऐसे मूव होगा एंटी क्लॉक। नाउ ये ऐसे मूव होगा, नाउ ये ऐसे मूव होगा एंटी क्लॉक, सुनो, नाउ ये ऐसे मूव होगा, ऐसा क्लॉक वाइज। नाउ ये ऐसे मूव होगा एंटी, नाउ ये, चलो भाई काउंट करिए कितना होगा, है ना। तो देखते हैं, 1, यहाँ से मैं काउंट करता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से काउंट करिए आप, ये 2, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और कौन सा मिसिंग है? यहाँ से देखिए, क्लॉकवाइज। और एक और कौन सा मिसिंग हो रहा है यहाँ पे? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और एक और ये है ना, यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये भी ऑल्सो इधर मूव करेगा और ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11 इज द राइट आंसर। 11 राइट आंसर होगा बेटा, आप काउंट करिए। 13 नहीं होगा बेटा, 11। सो 11 इज द राइट आंसर। जब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस चेन याद रखिए और सीधा सॉल्व हो जाएगा। ओके, 13 नहीं होगा बेटा, 11 होगा। एंड नाउ नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट वन। Figure show a clock line attached to a four independent pulleys PQRS. Which of the following option represent the correct options to correct rotation of pulleys that would result is lowering the cloth. Now this is the UC 2020 problem. Solve करिए भाई. What is the right answer? मेंशुरेशन भी होगा। ओके, मेंशुरेशन भी इसी वीक में होगा है ना। मेंशुरेशन भी हम इसी वीक में करेंगे। So mensuration problem also we discuss in this week. Okay. Yes, beta. Mensuration also discuss in this week. हम mensuration problem भी इसी week में discuss करेंगे. Yes, yes, beta. Next topic is है ना mensuration. Now it may be Saturday and Friday. Okay. So depends करता है. It may be Saturday. हम Saturday को mensuration discuss करेंगे. Okay. Now Saturday. Now problem number 61. क्या solve करते हैं ना? What is the right answer? तो उसने क्या बोला? Lowering the cloth. Now this is the knot. यहाँ से समझिए. नाउ दिस इज द नॉट। ये नॉट है और ये नॉट इसके ऊपर नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? पॉसिबल है? नो। नाउ ये नोट यहां से जाएगा। नाउ ये ऐसे मूव होगा। नाउ क्या मूव होगा? आर ऐसे मूव होगा यहां से देखिए। और जब आर एंड क्यू सिमिलर डायरेक्शन होंगे, नाउ पी ऐसे मूव होगा, ऐसे क्यूब ऐसे मूव होगा एंड पी ऐसे मूव होगा। नाउ एस भी आपका ऐसे मूव होगा। तो नाउ देखिए कौन सी डायरेक्शन मिल रहा है आपको? आर एंड क्यूब P and S similar direction. Now only option C is right answer. है ना? Easiest problem था 2020 का, 4 marks डन। Easiest problem, बस इतना करना था। ये नोट जाएगा ऐसा, ये तो इधर इससे जा ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। C is the right answer. Now this is the problem number, ठीक है, 16 UCEED 2022. ओके, नाउ पहले यहाँ समझना फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, so now everyone see the bottle. This is the small gear and now this is the large gear. Yes or no? This is the large gear and now this is the small gear. अब मैं बॉटल को रोटेट कर रहा हूँ। Yes or no? Suppose large gear and what is the speed of small and large gear? Similar है। Now this is the small gear and now this is the large gear. अब मैं large को रोटेट करूँगा। Now speed of large and smaller will be same. Speed of large and smaller gear will be same. Yes or no? Small gear and large gear क्या होगा? Speed will be same. फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना।
this is the this is the small gear and now this is the large gear. ओके इसके बाद रिपीट कर दूंगा. चलो भाई, दिस इज द प्रॉब्लम. बेटा सिंपल सा, उसने क्या बोला है सिंपल सा कि लोअरिंग द क्लॉथ, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ. इसको कहाँ पर नीचे लाना, मैं इसको नीचे लाना चाह रहा हूँ. तो ये नॉट है, देयर इज द नॉट. ये नॉट इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो मैं इसको जब भी लूज करूंगा तो ये वाला रोप यहाँ से जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा और ऐसा एंड नाउ ऐसा, ये. सो नाउ ये देखोगे तो आर इस तरीके से रिवॉल्व होगा, क्यू इस तरीके से, एंड पी ये होगा और एस भी ये होगा. तो नाउ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी. ओके सो नाउ यहाँ पर मैंने बॉटल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वो आई होप सभी को क्लियर होगा. ओके सो नाउ 3 1 2 1 3. ओके सो नाउ MNOPQRS, ठीक है. तो gear M is rotating at 100 RPM. So now this is the 100 RPM because the ratio is to 3 is to 1. Yes or no? Ratio is क्या है? 3 is to 1. Now gear N is also revolve to 300. कितना हो जाएगा? 300. ओके नाउ यहाँ पर देखेंगे, ये 300 होगा और ये कितना है 1 into 2. N and P के बीच में रेशियो क्या हो जाएगा 1:2. नाउ स्पीड क्या हो जाएगी हाफ. नाउ P रिवॉल्व 150. तो P and Q बोथ आर सिमिलर पॉइंट बिकॉज दोनों एक साथ लिंक है. P रिवॉल्व 150 RPM, तो Q also revolve 150 RPM. Now 1:3. Yes or no? क्या हो जाएगा 1:3. अब ये 3 है तो R कितना रिपीट हो जाएगा. सो Q एंड R का रेशियो कितना होगा 1:3. नाउ स्पीड ऑफ R इज 50. क्या हो जाएगा 50 RPM. और नाउ द रेशियो इज टू 3:T. तो मैं लिख सकता हूँ 3:2 इक्वल टू 50 इंटू एस. ये हो जाएगा आपका वेरी सिंपल सा, ऐसे देखो NR एंड NS और VR कितना गिवन है 50 एंड नाउ VS मुझे फाइंड आउट करना है. सो नाउ वी कैन से NR अपॉन NS इक्वल टू VS अपॉन VR. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NR. NR का वैल्यू कितना है 3. VS का वैल्यू कितना है 2 बिकॉज द रेशियो इज टू 3 2. लास्ट में देखिए ना 3 1 2 1 3 2. नाउ 2 VS की वैल्यूज क्या हो जाएगी, VS की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है और VR की वैल्यूज कितना है 50. नाउ 25 and now ES equal to 25 into 3. Now right answer is 75 RPM. Now 75 RPM है ना. UCEED NAT type problem, NAT problem 4 out of 4. Yes or no? So 75 is the right answer. So now this is the last problem. अब हम next session कल next topic के साथ discussion करेंगे. So now we conclude the session. So first of all एक और वही सेम चीज, अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके यार प्यार दोस्त जो भी है उनको शेयर करें. और वन है ना, वन एंड लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वही सेम चीज मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई हमारा जो बूट कैंप है वो 8 जनवरी से स्टार्ट है, जिसमें आपको 90+ आवर का सेशंस मिलेगा. साथ ही साथ आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है जस्ट 499. ओके ओनली 499 में ये सारा सेशन है, ये सारी चीजें मिलेंगी और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. वो बूट कैंप ओनली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट, कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल नहीं है.
तो आप लोग उसको क्या करिए, ऑफलाइन जो भी इंदौर में पॉसिबल है। अच्छा, इसको रिपीट करना है, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे समझ में आ गया रिपीट क्यों करना है ना, क्योंकि ये बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। बेटा पूरा सेशन जरूर देखना आप। नाउ दिस इज 3 1 2 1 3 2, बिकॉज बेटा देखो नाउ P and Q both have similar speed, similar speed because both are connected to the same point. Now 3:1. Now the our speed is 100. Now the speed is 300 because 3:1 upon क्वेश्चन मार्क अपॉन 100. सो नाउ ये क्या हो जाएगा n, है ना, वी एन अपॉन वी एन कितना आ जाएगा 300. नाउ वी कैन से 1:2 Vp upon 300. Now 150. Now Vp equal to 150. We know that Vp equal to Vq because both are connected to the uh, same point. Now Vq is also 150. Now we say Nq upon 1 upon 3 equal to Vr upon 150. So now this is 50. So now Vr equal to 50, and now we say 3:2, है ना, 3:2 equal to, है ना, 3:2 equal to S upon 50, and now 25, and Vs equal to 75 R. ओके, हाँ बिल्कुल रिपीट कर दिया मैंने। नाउ राइट आंसर इज 75 आरपीएम। ओके, तो फिर वही सेम चीज, तो बूट कैंप हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है आप सभी के लिए, और मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को, अगर आपको, क्योंकि जो लोग इंदौर में हैं उनको तो मस्ट ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज 499 बहुत ही कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, दिस इज द बहुत स्मॉलेस्ट अमाउंट है। बट यहाँ जो चीज़ें और जो सारी चीज़ें हैं वो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत जस्ट डबल एक अलग लेवल पर लेके जाओगे। और ये आपका सिंपल डेमो था, ठीक है। तो जो सेशन है आज का एक डेमो सेशन था कि हम सीड के प्रॉब्लम्स को कैसे विद इन अ सेकेंड सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये एक छोटा सा टॉपिक है, दिस इज द, है ना, गियर एंड पुली पार्ट ऑफ अ मैकेनिकल एप्टीट्यूड। और मैं सारे टॉपिक्स यानी विजुअलाइजिंग एंड सॉलिड, है ना, विजुअलाइजिंग एंड स्पेशियल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, ओके, स्पेशियल एप्टीट्यूड, सारी टॉपिक्स जो भी यूसी का सिलेबस है पूरा कवर करते हैं। और साथ ही साथ पीवाईक्यू, पीवाईबी एंड एक्स्ट्रा मॉक क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे आंसर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, तो मैं सेशन को, देयर इज नो possibilities written in Asham. Okay, this this session is only for online offline students, offline students at इंदौर सेंटर। और ये जो सेशन है वो इंदौर सेंटर के लिए है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर ट्राई करूंगा कि आसाम के लिए भी कुछ पॉसिबल। सो नाउ वी एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन।